Hi everyone, good evening. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I hope everybody is doing fine, right? Hi Sangam. Yes, Sangam, the 12th Monday session was missing. The reason was that we had another class going on at that time, so that was missing. So hi everybody, I hope all of you are doing fine. And I welcome all of you to the YouTube channel of Pratham Test Prep. So right now, what we need to do, we are doing the 11th session for the organization of data. Right now we are doing for class 11 the organization of data. So in the previous sessions, what we have covered in the previous sessions, we have covered the distribution of data, that how data is collected, how data, everything we have covered that. Right now let's start with the organization of data. अभी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, बट डेटा को ऑर्गेनाइज करना भी तो आना चाहिए. हाउ यू कैन actually organize that data, right? So let's start with the very first slide, which asks you about that what are the objectives of organization, or what are the objectives of basically this classification. आप जब classification करते हो तो ऐसा तो नहीं है आपने डेटा कलेक्ट करा और आपने नॉर्मली ही आप उसको क्या करने लगे, आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया. नो, you basically classify that data, right? So what are the objectives of classification? The very first objective is to reduce complexity. Now what do you mean by to reduce complexity? Reducing complexity का मतलब है that when you collect the data, it is very bulky, right? It is in a bulky form. बहुत सारे data आपका होता है, काफी heavy data होता है, but why you need to classify it? You need to classify it in order to reduce the complexity. थोड़ा सा आप उसको simplified version में मिल जाएगा, right? And then it will be very easy to actually use that data, right? Now the second objective for that is to facilitate comparison. Now one more thing which is really important is when you compare things or when you compare the variables, right? आप जब data को compare करते हो, it becomes very easy for you to do what? To conduct your own research. So that is the second objective of the classification, that for the comparison part also, or to facilitate comparison between two or more variables, you can classify, you should classify the data. Now when we compare, when we put it in that comparison wala table में, है ना, तो हमें क्या पता चलता है? We understand that what are the similarities and dissimilarities. So that is the third objective of classification, that it brings out the similarities and dissimilarities in the classification, right? आपका similarities और dissimilarities जो भी आपके variables में होता है वो आता है. Also, the next objective of this classification of data is that, as I've already told you, in a simplified manner, in a brief manner, right? जो भी हमारे पास डेटा है उसको, as I've already told you, कि बहुत ज्यादा डेटा आपका concise form में नहीं होता है, right? So in order to make it short, simple, in order to make it brief, hi Meghanshi, good evening, right? We need what? We actually classify the data. Okay, next is to arrange scientifically. Now there are several methods. अगर आपको याद होगा why statistics is important for economics, or why statistics is required for economics, and that we have covered that we need to actually arrange the data in order to get the optimum utilization of that, right? So आपका arrangement of data in a scientific manner is also required. And the last objective is to produce or to provide the base for analysis. ऐसा तो नहीं है कि आप analysis out of the blue के कर दोगे, right? You need to have a certain base, you need to have a certain cushioning so that you can actually do the analysis of that data. So here we have covered that what are the objectives of the classification. Okay, now moving further, we have the characteristics of a good classification. अगर आप data को classification कर रहे हो, then what are the characteristics? आपका, when we say that your data should be good, right? अभी हमने in the previous session, I hope you remember that we have covered the what are the characteristics of a good questionnaire, right? So similarly, these are the characteristics of a good classification, that if you're classifying the data, then how it should be classified. So the very first characteristic is that it should be arithmetically accurate,
ओके ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही डेटा को क्लासिफाई कर दिया अरिथमेटिकली एक्यूरेट एज इन, अगर आप उसका मीन मोड मीडियन रेंज निकाल रहे हो या कुछ भी, अगर आप क्लास इंटरवल्स, आपको पूरा प्रॉपरली यू नीड टू अरिथमेटिकली आपको उसको एक्यूरेट रखना है इन ऑर्डर टू गेट दी accurate result, right? Then the next is that your data should be mutually exclusive. ऐसा नहीं है that आपने सारे के सारे variables रख दिए, सब कुछ रख दिया, no. Your data should be mutually exclusive. You should keep only and only those variables, only and only those quantities wherein you feel like are important for your research, right? Next is that it should be stable. Stable as in आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम स्टेबल कैसे, राइट? आपका स्टेबिलिटी देना चाहिए, आपका जो क्लासिफिकेशन वो ऐसा है जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में, दैट इट शुड हैव अ बेस फॉर एनालिसिस, राइट? सिमिलरली व्हाट यू नीड टू हैव अ स्टेबल क्लासिफिकेशन, राइट? स्टेबल के साथ साथ उसमें आप रिजिड नहीं रख सकते. स्टेबल डजंट मीन कि आप उसमें अपने डेटा में कुछ चेंजेस ना करो, एक बार जो हो गया वो हो गया, नहीं. स्टेबिलिटी एज इट शुड बी स्टेबल इन नेचर, ऑल्सो इट शुड हैव द एबिलिटी दैट यू कैन जस्ट play around with the data if required. आपको वो rigid नहीं रखना है. If required, if you want कि थोड़ा data आपको इधर से उधर करने कुछ भी है, so it should have that flexibility का nature in itself too, right? Your data should be homogeneous. I hope you all understand what is the meaning of homogeneous and heterogeneous. Hello guys. हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी भी आ सकती है बेटा, बिल्कुल थ्योरी आपकी आ सकती है, राइट? योर डेटा शुड बी होमोजेनियस. होमोजेनियस का मतलब क्या है? होमोजेनियस का मतलब है दैट इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर थिंग, है ना? पूरा आपका हेटेरोजेनियस डेटा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंटर इज दैट इट शुड बी एग्जॉस्टिव इन नेचर. आपका ऐसा डेटा हो कि पूरा का पूरा जो भी आपका रिसर्च है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जिस भी रीजन से आप अपने डेटा आपने कलेक्ट करा है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको क्लासिफाई कर रहे हो, इट शुड बी एग्जॉस्टिव इन नेचर. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने बस एकदम जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें सैंपल ऐसा उठाना है दैट इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. इन अ सिमिलर फैशन इट शुड बी एग्जॉस्टिव इन नेचर, दैट इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर data. Also, the last characteristic for a good data is that it should be suitable. Hi Vansh, that it should be suitable. The data should be suitable for your study. So these all are the characteristics of a good classification of data, right? Now moving further, we have that what all are the methods of or the basis of classification. अब आपने पढ़ा होगा कि आपके methods या basis of classification होता है, आप डेटा को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टडी, राइट? जिस टाइप की हमारा स्टडी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासिफाई आवर डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्टडी है रिलेटेड टू सम टाइम पीरियड, है ना, उसमें कुछ टाइम इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल कि ओके क्वार्टरली स्टडी हमें करनी है, या फिर हमको एनुअल रिव्यू करना है किसी चीज का, या वीकली एनालिसिस करना है किसी चीज का, जहां पर हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, राइट? व्हेन वी हैव द टाइम इन प्लेस, उस टाइम पर हम कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? वी यूज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. whereas जहां पर हमें इस चीज के बारे में बात करनी है कि ओके what is the income of the people who are working in XYZ company, right? Or what is the average age of the people working in or the teachers teaching in a school? What is the height, average height of the students in a class? अगर इस टाइप का डेटा को आपको एनालाइज करना है या कुछ करना है, what we do, we use the quantitative classification, right? Whereas अगर कुछ डेटा होता है जैसे कि आपका हो गया सेंसस, राइट? आपका सेंसस क्या है? दैट इज रिलेटेड टू अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, है ना? जैसे इंडिया का सेंसस की अगर हम बात करें या किसी और कंट्री के सेंसस की बात करें, तो जहां पे आपका विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन है वो क्या आएगा? देन it will be under the geographical classification. लेकिन जहां पर आपका है कि okay we are seeing or we are calculating or we need the data on the basis of some qualities. For example, the honesty, right? Intelligent कितना है, the IQ level, इन सारी चीजों पे अगर हम बात कर रहे हैं, इन सारे attributes की अगर बात कर रहे हैं, then what we need to do, we need to put our data in the qualitative classification. So these are the
4 major methods or basis of classification of data. So let's do this one by one. एक एक करके हम पढ़ते हैं. What do you mean by geographical classification? As I've already told you that it is related to the location. ये आपका location से related है कि जब भी डेटा आपका क्लासिफाई होता है with respect to location, with reference to the location such as the country, states, cities, district, etc. इसको हम क्या बोलते हैं? Then we say that it is under the geographical classification. And also this data or this type of classification is also known as spatial classification, right? So such type of questions or such type of things you can expect. आप में से किसी ने पूछा था कि मैम स्टैट्स में थ्योरी भी आती है क्या? Yes, स्टैट्स में थ्योरी भी आती है और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं that which method or basis of classification is also known as spatial classification? It is geographical classification. Moving further, as I've already told you that when we are talking about like the height of students in a class, or the age of teachers who are teaching in a school, right? Or the income of employees working in a MNC, right? Or the marks of students of a school, right? So all this lies under what? All this lie under the quantitative classification. Just keep in mind, जो भी quantities आपकी measurable होती हैं, all the quantities which are measurable in nature, जिनको आप measure कर सकते हो, जिनके आप unit में measure कर सकते हो, you keep them in what? You keep them under the quantitative classification, right? So these are the type wherein you can measure the characteristics, जहाँ पर आप characteristics को measure कर सकते हो, right? हाँ जी बेटा, हिंदी में भी हम आपको पढ़ा सकते हैं. Technical gamer, okay, we can teach you in Hindi as well, because see what I'm doing is whatever I am teaching you, I'm just making it sure कि मैं आपको एक बारी हिंदी में भी explain करूं. So geographical classification क्या है बेटा? Geographical classification है जहाँ पर हम किसी location के respect में बात कर रहे हैं, जैसे आपके city का कोई survey हो रहा हो, आपके state का कुछ हो रहा हो, या फिर country में census का data collect हो रहा हो, तो वो सब किसके अंदर आता है? वो सब आता है आपका geographical classification के अंदर, right? When I talk about quantitative classification, so quantitative classification क्या होता है? Quantitative classification होता है जब आप किसी भी चीज को measure कर पाओ, जिन variables को आप measure कर पा रहे हो, जैसे आप अपनी age को measure कर सकते हो, right? आप अपने height, आपकी income, आपके marks को आप measure कर सकते हो. So जिन सारी चीजों को आप measure कर सकते हो, वो क्या है आपका? वो है आपके quantitative classification में आता है, right? अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है जिन एट्रीब्यूट्स को या जिन वेरिएबल्स को आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे आप ऑनेस्टी को, आप लिटरेसी को, आप किसी के मैरिटल स्टेटस को, राइट, कि कोई मैरिड है या अनमैरिड है, इस सारी चीजों को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते. ओके, सो the data which is classified on the basis of qualities like honesty, beauty, intelligence, literacy, marital status, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके आते हैं qualitative measures में, which are non-measurable, right? The attributes which are non-measurable lies under the qualitative measures. Okay. Now the last is chronological classification. आपने बहुत बारी देखा होगा कि आपका yearly आपकी बात होती है कि ओके वी नीड अ वीकली रिपोर्ट, और क्वार्टरली रिपोर्ट्स की बात चलती है कंपनीज में, या फिर इनफैक्ट स्कूल्स और ऑल में भी होते हैं, जहां पर आपका पूरा टाइम के बेसिस पर होता है, राइट? तो जहां पर भी आपका डेटा चाहिए होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. Chronological में क्या है? On the basis of time, whenever the data is required, we usually classify it under the chronological classification. जैसे कि हम geographical classification को spatial classification बोलते थे, similarly हम chronological classification को we call it as temporal classification. What do we call it as? We call it as temporal classification. TEMPORAL. We call it as temporal classification, right? With reference to years, quarters, months, or weeks. Okay. So I hope the basis or the methods of classification is clear to you. Okay. अब मैं इतनी देर से आपको याद होगा, मैं इतनी देर से आपको एक चीज बता रही हूँ, एक बात आपको बार बार बता रही हूँ, कि एक चीज बार बार बोल रही हूँ मैं,
वेरिएबल्स, है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस वर्ड वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स आप समझ सकते हो कि जो चीज आपकी, जिससे भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो वो क्या है, वो है आपके वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स अगर मैं आपको बताती हूँ, वेरिएबल का मतलब होता है जो वैरी करे, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच वैरीज, राइट, जो आपका वैरी करे, जो आपका फ्लक्चुएट करे या फिर जो आपका चेंज करे। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स भी आपके वही आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके रिसर्च के टाइम पर वैरी कर सकते हैं, जो आपके रिसर्च के टाइम पर चेंज हो सकते हैं, राइट। सो लाइकवाइज वी हैव टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज डिस्क्रीट वेरिएबल। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है कि भाई ये फिक्स्ड है, राइट। discrete variable exact variable है। What are these discrete variables? Are the exact variables। अगर आपसे किसी ने पूछा that how many siblings are you, right, या फिर how many cousins are there in your family or how many cousins do you have, अगर ये चीज आपसे किसी ने पूछी, आप एक एग्जैक्ट आंसर दोगे, आप फ्रैक्शंस में नहीं दोगे, आप किसी चीज में नहीं दोगे, यू विल गिव एन एग्जैक्ट और अ फिक्स्ड आंसर, राइट। ऐसा तो नहीं है आप बोलोगे कि 3/4 है या 4/3 है, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे, राइट। यू विल गिव अ फिक्स्ड और अ स्पेसिफिक आंसर। तो ये क्या है? दैट इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली और द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस देम इन फ्रैक्शंस। आप इधर 1 2 3 4 इनफाइनाइट ऐसे ऐसे में आप इसको एक्सप्रेस करोगे, आप फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं करोगे। वेयरएज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं बेटा, सेकेंड काइंड ऑफ वेरिएबल्स जो है आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स है, वो क्या होते हैं? जो आप फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर पाओ, राइट। जिन वेरिएबल्स को आप फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर पाओ आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। अगर आपने देखा होगा टेम्परेचर आपका हो गया, आप टेम्परेचर को फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हो कि 97 पॉइंट दिस, राइट। आप मार्क्स को कर सकते हो दैट 5.5 7.5, right. So ये सारे क्या है? These are the continuous variables that can take all possible values. What are continuous variables? That can take all possible values, जिनके सारे possible values वो ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी, नंबर, फुल नंबर में भी, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो गया, आपके मार्क्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो गए, राइट। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। ओके, now moving further we have the statistical series which is based on the quantitative value. अब quantitative value क्या? Quantitative value is on the basis of numbers. Quantitative value क्या? Quantitative value is on the basis of numbers. तो quantitative value की जो statistical series होती है, basically वो आपके दो टाइप की सीरीज होती है। एक तो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है और एक आपकी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अभी आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, बट once you do the questions, once you do the numericals on that, it is very very easy, right. दो टाइप की आपकी सीरीज है, individual series and frequency distribution series. What is individual series? Individual series वो होती है जहाँ पे सारे के सारे जो आपके आइटम्स होते हैं वो एज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन ही लिस्टेड होते हैं, राइट। सारे के सारे आइटम्स क्या है? एज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन वो लिस्टेड है। सो आपको अगर इसके बारे में और डेप्थ में जानना है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, इफ यू वांट टू नो कि ओके हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, just stay tuned with Pratham Test Prep's channel. We will be having multiple sessions ahead wherein I'll be explaining you the statistics with examples, with questions too. Then I'll explain you in detail that this is particular is an individual series. Individual series for theory, let me tell you that this is that kind of a series जहाँ पर आपके items जो है वो individually listed होते हैं। आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, right? वो एक single individual या फिर आप कह सकते हो as a single observation these are listed, right? So series of individual observation is a series where items are listed singly as observation, as distinguished from listing them in a group.
दूसरी बारी आती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, यहाँ पर आपकी ना, अगर आपको याद होगा, एक आपका वेरिएबल और एक उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है, अगेन वो आपकी वो होती है जिसमें आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, एक या दो से ज्यादा आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या है? ये आपके दो टाइप का होता है, जिसमें एक वेरिएबल से बना हो, दैट इज यूनिवेरिएट frequency distribution which is made up of only one variable, and जो दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आप पढ़ रहे हो, so that is bivariate frequency distribution series. Okay, so these are the two types of frequency distribution series. One is univariate जहाँ पर एक वेरिएबल होता है, and second is the bivariate frequency distribution series wherein they have two or more variables. Okay, now moving further, we have that what is univariate frequency distribution. Univariate मतलब याद रखना जहां पर single variable है, right, wherein they have just a single variable for study. उसी में आपकी दो तरीके की सीरीज है, you have discrete series and you have continuous series. You have two types of series, discrete and continuous. Discrete का मतलब क्या है? Discrete का मतलब डेटा वैसे का वैसे ही आपका प्रेजेंट है, राइट, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में प्रेजेंट है, क्लियरली आपका जो डेटा है वो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 3 बच्चे हैं ए बी सी डी, एग्जांपल 4 बच्चे हैं, चारों का जो मार्क्स है, किसी के 15 है, किसी के 17 है, किसी के 19 और किसी के 16 मार्क्स है, डायरेक्टली आपका डेटा गिवन है, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिस्क्रीट सीरीज वेयरइन द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स आर इंडिकेटेड। वेयरइन आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है आपकी, अगर आपने नोटिस किया होगा, कोई कोई सीरीज आपकी ऐसी भी है, जैसे ए का है बिटवीन 0 to 5, बी का 5 to 10, सी का 10 to 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ, जहां पर आपका क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं, जहां पर आपकी अपर लिमिट हायर लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, अगेन दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो जहां पर आपकी लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स दिया हुआ होता है, जहां पर आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं, जहां पे कॉन्टिन्यूअस में एक सीरीज है, वो क्या है? दैट इज योर continuous series. I hope it is clear that what is univariate, what are the types of univariate frequency distribution. Discrete में सिंपल आपका दे रखा है यूनिट, आपका वेरिएबल और उसकी एग्जैक्ट यूनिट दे रखी है। कॉन्टिन्यूअस में देयर इज अ सीरीज, एज इन देयर आर क्लास इंटरवल्स, लिमिट्स एंड ऑल, सब होता है आपका, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, आई हैव अ स्लाइड ओवर हियर व्हिच शोज यू द टर्मिनोलॉजी। ये स्लाइड आपकी पूरी टर्मिनोलॉजी शो करता है कि किस टाइप, बेसिकली टर्मिनोलॉजी एज इन द डेफिनेशन। आपको मैंने बताया अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है जहां पर आपका दो लिमिट्स के बीच में जो आपका दिखाया जाता है वैल्यू ऑफ आइटम्स विच आर शोन बिटवीन टू लिमिट्स। यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था 5 और 10 के बीच में जो आपका वैल्यू ऑफ आइटम्स है, दैट इज व्हाट, दैट इज द क्लास इंटरवल, एंड इसको आप ग्रुप भी बोलते हो। ओके, ये आपके ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया था, राइट। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये होता है जहां पर आपका क्या है, आपकी दो लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स, और इसको आप ग्रुप या क्लास इंटरवल भी बोलते हो। मूविंग फर्दर, व्हाट इज अ क्लास लिमिट? क्लास लिमिट आपकी होती है वो लिमिट जिसके बीच में सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस लाई करते हैं। व्हाट इज अ क्लास लिमिट? क्लास लिमिट इज दैट लिमिट वेयरइन ऑल द ऑब्जर्वेशंस लाई। ओके, अब उसके बाद आपकी बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल या फिर क्लास विड्थ। ये भी एक आपकी टर्म है, क्लास विड्थ या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। ये क्या है आपका? जब आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास? क्लास विड्थ या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल आ जाता है। इधर आपकी लास्ट स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, अपर लिमिट इज इन दिस लास्ट केस अपर लिमिट इज 15 एंड लोअर लिमिट इज 5। जब आप लोअर लिमिट इज 10, जब आप 15 में से 10 को माइनस करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा? आपको मिल जाएगा क्लास विड्थ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज
बहुत सारे नाम है इसके, इसको सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल साइज भी बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ये सब क्या है, ये होता है जो आपका मिड पॉइंट हो, मिड वैल्यू हो क्लास इंटरवल की, वो क्या होता है आपका, दैट इज नोन एज सेंट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट। जितने भी आपके जो भी टोटल क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं आपके, उसका जो मिड वैल्यू है, जैसे इस पर्टिकुलर में मिड वैल्यू इज दिस 5 to 10, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट, राइट। अभी आपको याद होगा मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया था अबाउट क्लास फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में व्हिच लाइज इज नोन एज व्हाट, इट इज द क्लास फ्रीक्वेंसी। आप इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? ऑल्दो ये बहुत कम आपका यूज होता है, ये बहुत कम आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज बेसिकली आपका एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, राइट। पर यूनिट एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जब आप निकालते हो, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। बट इन स्पेसिफिकली और केसेस ये काफी ही कम है, इतना ज्यादा आपका नहीं पूछते हैं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। लास्ट में आपका आता है रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन the lower limit of first class interval and the upper limit of last class interval। अगर मैं इस एग्जांपल से अगेन समझाऊं, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल दैट इज 0 एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल दैट इज 15। तो रेंज क्या हुआ, 15 minus 0 is equals to 15, दैट विल बी द रेंज। जहां पर आप लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल में से माइनस करते हो अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन टू इज नोन एज द रेंज। याद रखना बेटा, क्लास विथ क्या होता है? क्लास विथ होता है जब आप एक ही क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। रेंज क्या होता है? पूरे इंटायर जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपने जो लोअर लिमिट पहले क्लास इंटरवल का लिया और अपर लिमिट लास्ट क्लास इंटरवल का लिया, दैट इज द रेंज। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द मेथड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये भी एक अलग ही पूरा टॉपिक है कि भाई क्लास इंटरवल हमने इतनी देर से बात किया, बट हम कौन से मेथड यूज करें क्लास इंटरवल लेने में, तो आपने क्लास इंटरवल बनाने में। तो फिर आपने कई बार देखा होगा कि एट टाइम्स आपको ऐसा दिया हुआ होता है 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, राइट। ऐसा आपका क्लास इंटरवल दिया होता है, राइट। कुछ केसेस में आपका क्लास इंटरवल कैसा है, कुछ केसेस में आपका क्लास इंटरवल दिया होता है जहां पर उन्होंने लास्ट वाली लिमिट को इंक्लूड नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकते हैं 0 to 9, then they can say 10 to what, 10 to 19, then 20 to 29, 30 to 39, ऐसे ऐसे। अगर आप नोटिस करो इसमें आपका 10 इधर भी है, इधर भी है, 15 इधर भी है, इधर भी है, राइट। इसमें वो आपको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है द एक्सक्लूसिव मेथड wherein the observations of upper limit of each class interval are not included in the that particular class, right। आपकी upper limit जो होती है वो आपकी included नहीं होती of that class interval, that is exclusive method। दूसरे टाइप का जो मेथड होता है wherein the upper limit and lower limit of a class interval are included, that is the inclusive method। Now what is the cumulative frequency distribution? Cumulative frequency distribution क्या? Cumulative frequency distribution is constructed जब आप, cumulative का मतलब क्या होता है? Cumulative का मतलब is summation। summation यानी कि total, right। जब आप सारी की सारी frequencies को जब आप add कर देते हो of any class interval, right, फर्स्ट क्लास के इंटरवल की सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हो विद द सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज, तब जो टोटल फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या है आपका? दैट इज द फ्रीक्वेंसी cumulative frequency distribution। When you do the summation, the frequency of first class interval is added to the frequency of second class interval and the third class interval and so on so forth। अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके इस तरीके से दो टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन का क्या मतलब है? लेस देन का मतलब है जहां पर आपका डाउनवर्ड क्यूमुलेटिव रिजल्ट आ रहा हो, राइट। डाउनवर्ड क्यूमुलेटिव रिजल्ट आ रहा हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द डाउनवर्ड क्यूमुलेटिव रिजल्ट इन अ लिस्ट व्हिच प्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी
लेस देन एनी गिवन वैल्यू. लेस देन क्यूमुलेटिव में क्या? लेस देन क्यूमुलेटिव में याद रखना, लेस देन क्यूमुलेटिव में we are talking about the downwards result, right? And more than cumulative में we are talking about the upwards result, right? Upward or more than any given value. Okay, less than cumulative frequency is what? Less than cumulative frequency is the downward cumulative result in any list which presents a number of frequency less than to any given value. किसी भी given value से जो कम less than frequency है उससे आपका क्या होगा? Which is revealed by the lower limit of the next class interval, that is the less than cumulative frequency. इसी का just opposite, जहाँ पर upper limit की बात हो रही है, more than any given value which is revealed by the upper limit of उससे पहले वाला of the preceding class interval, that is known as what? That is known as the more than cumulative frequency distribution. So here we have done in a theoretical manner. Next session में I'll try to add some graphs too. Next session में I'll try कि आपके जो questions के form में I'll put 1 or 2 questions, I put 1 or 2 examples in a proper आपका tabular form so that it becomes easy for you to, or it becomes easier for you to actually relate to that, right? Last is the relative frequency distribution. Relative frequency distribution में simple है, जब as a परसेंटेज आप देखते हो, एज अ परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हो, एज अ परसेंटेज आप मेजर करते हो. जस्ट कीप इन माइंड बेटा, स्टैटिस्टिक्स का एक चीज याद रखना, अगर आप इसके डेफिनेशंस एंड ऑल पूरा लर्न करने बैठे बहुत दिक्कत हो जाएगी. ऑलवेज मेक श्योर और ऑलवेज ट्राई टू relate or to put 1 or 2 words. आप एक दो words रखो, उसके साथ अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, it will be very very easy for you. जैसे relative frequency का मैंने आपको क्या बताया था? Percentage word. जब आपकी frequencies को as a percentage of total number of observation या relative frequency की तरह obtain किया जाता है, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं it is known as the relative frequency distribution. What? As a percentage, right? So this was all about the organization of data, right? This was all about the organization of data. Statistics का topic है organization of data. In the next sessions, we'll be coming up with the more topics, right? That will actually cover. So what we are planning? We are planning to have this type of sessions at 9 p.m. Guys, what about 9 p.m.? What about 9 p.m. for class 11th on every Wednesday? I think 9 p.m. is way better timings than 7 p.m. right? Because at 7 you guys have your coachings, maybe आपके और भी आपके tuitions होते हैं, coachings होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, right? So from next week the sessions will get conducted at 9 p.m. Okay, so make sure to tune in. So that also just make sure to subscribe to Pratham Test Prep's channel. Hi Aditya. Subscribe to Pratham Test Prep's channel so that you get notified, okay? Because from next week we'll be starting this series at 9 p.m. okay? So for class 11 it will be at 9, and for 12 it will be at 9 on Mondays and Fridays, right? So with this, thank you so much guys. If you like this video, please give it a huge thumbs up. Thank you so much for being so patient, and we'll be meeting super soon. But before that, like this video, subscribe to Pratham Test Prep's channel so that you get notified whenever we go live or whenever we upload a new video. Okay, so thank you so much. Stay safe. Take care. Bye guys.